Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the next organelle of the cytoplasm, that is the Golgi bodies. It is also the double-membered organelle and it plays different functions in the cell. There are different names of the Golgi bodies. It is also called the Golgi apparatus, also known as the Golgi complex. Dalton complex is also the name of the Golgi bodies. It is also called the lipochondria or simply the Golgi we can use. Golgi body is an organelle that found in most eukaryotic cells. Golgi body is mainly made up of series of flattened stack pouches called cisternae. जब cisternae flattened stacks बनाएंगे, that will form the structure of the Golgi bodies. It was identified in 1897 by the Italian scientist Camillo Golgi. इस Camillo Golgi के नाम ही की बेस को Golgi bodies का नाम दिया. Ultrastructure of the Golgi bodies was given by Dalton. That's why we also give the Golgi bodies as a Dalton complex. क्योंकि Dalton साहब ने ultrastructure of the Golgi bodies present किया. The term Golgi apparatus was used in 1910 and in 1913 it first appeared in the scientific literature. टर्म 1910 में इस्तेमाल हुई लेकिन लिटरेचर में 1913 को अपीयर हुआ वर्ड Golgi body. It was the first cellular organelles to be discovered and observed in detail due to large size. ये पहली organelle है जिसको डिटेल में ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया because of its large size. Occurrence of the Golgi bodies. The Golgi complex occurs in all cells except the prokaryotic cells and eukaryotic cells of the certain fungi. Golgi bodies तमाम यूकार्योटिक सेल्स में है एक्सेप्ट द प्रोकार्योटिक सेल, लेकिन कुछ यूकार्योटिक सेल्स में Golgi bodies लैक होते हैं. लाइक कुछ फंजाई में Golgi bodies नहीं होते. Sperm cells में Golgi bodies, sperm cells of brophytes have no Golgi bodies, and sperm cells of the pteridophytes have no Golgi bodies. Cells of mature cereals have no Golgi bodies, and mature sperm and red blood cells of animals have no Golgi bodies. Morphology of the Golgi complex. The morphology of Golgi complex varies from cell to cell depending upon the type of cell in which they are found. Different cells में इसकी morphology different होती है. Two forms of Golgi complex have been observed: localized form and the diffuse form. Localized form पे बात करते हैं. Localized form in polarized cells of vertebrates. Polarized cells वो होते हैं जिसके दो ends होते हैं. One have the base and second is called apex. Golgi complex occurs singly and occupies a fixed position. तो पोलराइज सेल्स में लाइक वर्टिब्रेट सेल्स में ये सिंगल Golgi bodies होते हैं और फिक्स पोजीशन होती है, उनकी लोकल पोजीशन पे सेट किए होते हैं. इट लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेक्रेटरी पोल. तो इनकी जो पोजीशन होती है वो न्यूक्लियस और सेक्रेटरी पोल के दरमियान में होती है. दिस कैन बी बेस्ट सीन इन थायराइड सेल, इन exocrine cells of the pancreas and the mucous cells of the intestine. ये different locations हैं localized form of the Golgi bodies की. Diffuse form of the Golgi body. In some specialized cells of vertebrates, like the nerve cells and the liver cells, in most plant cells and in cells of invertebrates, several units of Golgi complex are found scattered along with the elements of endoplasmic reticulum. तो कुछ सेल्स में जिस तरह नर्व सेल की मैंने बात की, लिवर सेल्स की बात की, तो उनमें जो Golgi complex होते हैं वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्कैटर होते हैं अराउंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ईच यूनिट ऑफ द Golgi body is called cisternae, जो flattened sac के फॉर्म में that is like the pita bread की तरह वो अपने को अरेंज किए होते हैं. तो each unit of the bread or each unit of the Golgi body is called the cisternae. If you look at the shape of the Golgi bodies, the shape of Golgi complex is quite variable in different somatic cell of animals. Even in same cell there are variations in different functional stages. Different functional stages में एक जैसे में variations होती हैं Golgi bodies की. The shape is however constant with each cell type. It varies in form from a compact mass to a dispersed filamentous network. तो इसमें variations होती हैं जो compact mass to dispersed filamentous network की form में होती हैं. Number of the Golgi bodies with बात करें तो नंबर ऑफ Golgi body वेरी, ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सेल और फंक्शन ऑफ दी सेल्स पे. अगर कोई सेल जिसकी सिक्योरिटी फंक्शन ज़्यादा है उसमें नंबर ऑफ Golgi bodies, उसमें सिस्टर्नी का नंबर ज़्यादा होगा. द नंबर ऑफ Golgi stacks per cell varies enormously depending on the cell type from a few as 1 to hundreds. तो जो नंबर ऑफ सिस्टर्नी है वो एक भी हो सकते हैं और 100 तक भी हो सकते हैं. नर्व सेल्स, liver cells and most plant cells also have multiple Golgi complexes. There being
there being about 50 in liver cells. In algal rhizoids, more than 25,000 Golgi complex are seen. तो ये नंबर किस पे डिपेंड करते हैं? फंक्शंस पे डिपेंड करता है. Size of the Golgi bodies. The size is likely wise variable. It is large in the nerve and gland cells and small in the muscle cells. जो साइज है वो नर्व और ग्लैंड सेल में ज्यादा होता है और मसल सेल में कम होता है. इन जनरल द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज वेल डेवलप्ड व्हाइल द सेल्स इज इन एक्टिव स्टेट. तो एक्टिव स्टेट में जो सेल होंगे उनमें गोल्जी बॉडीज सबसे ज्यादा डेवलप होंगे, उनका साइज लार्ज होगा. व्हेन द सेल ग्रोज ओल्ड द कॉम्प्लेक्स progressively diminishes in size and disappears. तो old cells में इनका साइज कम होता है और ये disappear हो जाते हैं. Position of the Golgi body. The position of Golgi complex is relatively fixed for each cell type. की position fixed होती है हर सेल के लिए. In the cells of ectodermal region, the Golgi complex is polarized from the time of the embryonic state between the nucleus and the periphery. In the secretory exocrine cells, that have in general a typical polarization, the Golgi complex is found between the nucleus and the secretory pole. तो ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सेल पे. किसी के में वो secretory pole और न्यूक्लियस के दरमियान में होते हैं, किसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और किसी में वो पेरिफेरल में अटैच होते हैं. तो ये डिपेंड करते हैं कि वो लोकलाइज्ड फॉर्म है उसकी या डिफ्यूज फॉर्म ऑफ द Golgi body, और ये भी टाइप ऑफ सेल और फंक्शन ऑफ सेल पे डिपेंड करता है. कंपोजिशन ऑफ द Golgi body. चूंकि Golgi body डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो इसकी कंपोजिशन में फास्फोलिपिड्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे और एंजाइम्स भी होंगे. फास्फोलिपिड कंपोजिशन. Phospholipid composition of Golgi membrane is intermediate between those of endoplasmic reticulum and plasma membrane. तो इसमें जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरमीडिएट होते हैं. Proteins and enzymes. Golgi complex from different plant and animal cells show great variations in the protein and enzyme contents. Some of the enzymes are ATPase, NADPH, cytochrome C reductase, glycoside 1 transferases, galactoside 1 transferase, thiamine, pyrophosphate, etc. These are different types of enzymes that are mainly found in the Golgi bodies. Carbohydrates are also the component of the Golgi bodies. Both plant and animal cells have some common carbohydrate components like glucosamine, galactose, glucose, mannose, and fructose. Plant Golgi lacks salic acid, but it occurs in high concentration in rat liver. Some carbohydrates like xylulose and arabinose are present in plant cells only. These two are the component of the Golgi body of the plant cells only. Vitamin C. Golgi complex stores vitamin C and degrades it slowly into the cytoplasm in sufficient amount to prevent oxidation of the cell products. So vitamin C is also the part of the vitamin C is also the part of the Golgi complex that mainly help in the prevention of oxidation of the cell products. General structure of the Golgi bodies. The Golgi complex or the Golgi body is composed of stacks of membrane bound structures. These structures are known as the cisternae. जो membrane bound structures होती हैं जो single, जिसको हम cisternae बोलते हैं, ये stacks बनाते हैं जिससे Golgi body का structure form होता है. In a typical animal cell there are about 40 to 100 stacks. ये depend करता है type of cell पे. किसी में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं. For example जो fungus cell है उसमें सिर्फ एक stack होता है, एक cisternae होता है. In a stack there are about 4 to 8 cisternae. Each cisternae is a disc enclosed in a membrane. It possesses special enzymes of Golgi which help to modify and transport of modified protein to their destination. तो इस इन cisternae में different types of enzymes होते हैं जो Golgi bodies के function perform करते हैं. The flat stacks of cisternae are stacked and is bent in semicircular shape. जो stacks होते हैं वो bent form होते हैं, semicircular की form में अपने आप को arrange करते हैं. Each group of stacks is membrane bound and its insides are separated from the cytoplasm of the cell. Membrane है उसको cytoplasm of the cell से वो separate करती है. The interaction in the Golgi membrane is responsible for the unique shape of the apparatus. The Golgi complex is polar in nature. Polar in nature means it has two parts. One is called the concave part and second is called the convex part, and one is called the cis and second is called the transverse. One is called the cis space and second is called the transverse. That's why it is called the polar structure or polar in nature. The membranes of one end of the stack is different in composition and thickness to the membranes at the other end. तो दोनों end की जो
composition और thickness है वो different है. That's what is called the polar structure. One end of the stack is known as the sys phase. It is the receiving department, while the other end is the trans phase. It is the shipping department. जो receive करता है उसको sys phase बोलते हैं, जो transport करता है that is called the जो transport, that is called the transphase or shipping department कहते हैं उसको. The cis phase of the Golgi apparatus is closely associated with the endoplasmic reticulum. तो cis phase की जो डायरेक्शन होती है, जो उसकी लोकेशन है, वो endoplasmic reticulum के बिल्कुल करीब होते हैं. That's why the cis phase have to receive the material from the endoplasmic reticulum. These are the stacks of the cisternae. जब cisternae ने अपने आप को अरेंज किया मुख्तलिफ स्टेक्स में, तो इससे Golgi कम्प्लेक्स बने. तो ये जो इंडिविजुअल जो है इसको हम cisternae बोलते हैं. These are the band structure, या इन अपने को बैंड किए हुए और इनके दरमियान कोई फिजिकल कनेक्शन मौजूद नहीं है. तो इट इज़ द cisternae. हर सिस्टरनी ने अपने आप को अरेंज किया, उससे स्टेक्स ऑफ सिस्टरनी बना, दैट फॉर्म द Golgi कम्प्लेक्स. इसमें मुख्तलिफ किस्म के वैक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और स्मॉल वैक्यूल्स आर कॉल्ड द वेसिकल्स. एंड this is the trans phase of the Golgi body that is responsible for the transport, and this is the cis phase of the Golgi body that is receiving. It is nearest to the endoplasmic reticulum, and this circular portion of the cistern is called the Golgian vacuole. It's called the Golgian vacuole, and the space that is in between two cistern is called the medial Golgi. अगर हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें Golgi apparatus की, तो हमने डिस्कस किया Golgi apparatus जो सिस्टरनी होते हैं, ये सिस्टरनी जब आपस में स्टैक बनाते हैं तो Golgi कम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं. ये सिस्टरनी का अब इन सिस्टरनी का आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता. इसमें हर सिस्टरनी सेपरेटली लोकेटेड होता है और वो एक स्टैक की फॉर्म में मौजूद होते हैं. इसके दो पोर्शन होते हैं. वन इज कॉल्ड द सिस फेस, दैट इज कॉल्ड द रिसीविंग फेस, एंड द सेकंड इज कॉल्ड द ट्रांस फेस, दैट इज कॉल्ड द शिपिंग फेस. जो कन्वेक्स लेग स्ट्रक्चर होता है वो जो सिस फेस होता है, और जो कनकेव लेग स्ट्रक्चर होते हैं ट्रांस फेस होता है. तो जब Golgi बॉडी रिसीव करते हैं सिस फेस Golgi बॉडी का या सिस्टरनी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसी वेसिकल को, उसको मैच्योर करेगा. उसको मैच्योर करने के बाद ट्रांसपोर्ट कर देगा. आइदर दिस ट्रांसपोर्टेशन इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इट इज आउट ऑफ द सेल. तो सम जो वेसिकल होते हैं वो बैक जो Golgi बॉडी को ट्रांसफर होते हैं, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर होते हैं जहां पे वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द Golgi बॉडी की हम बात करें तो मेनली इसमें सिस्टरनी होती हैं. द सिस्टरनी आर सेक्यूल्स आर सिमिलर टू स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अपीयर इन सेक्शन एज स्टैक्स ऑफ क्लोजली स्पेस्ड मेम्ब्रेन delimited sacs. The number of sacules varies from 4 to 8 in most animals and plant cell. In Euglena, the number may go up to 20. According to most authors, there are two well-defined faces of the cisternae, convex or concave. हम डिस्कस कर चुके हैं. The concave is generally referred to as the mature or forming or distal phase, and the convex side is assumed to be immature or excite or proximal phase. The cisternae lies in parallel array or separated from each other by a space of about 200 to 300 angstrom. जो मैच्योर फेस होती है, जो ट्रांस फेस है, उसको हम कनकेव फेस बोलते हैं. और जो इमेच्योर फेस है, जो प्रोक्सिमल फेस है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब वाला फेस है, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्स फेस, दैट इज द कन्वेक्स साइड, उसको हम सिस फेस भी बोलते हैं. जो डिफरेंस होते हैं जो दो सिस्टरनी के दरमियान, वो 200 to 300 angstrom होता है. What holds them together is not yet known, but in a few cells a thin layer of electron opaque, sometimes dense material is seen between the sacules, which is certain regions are more permanent. तो ये जो sacules हैं, जो सिस्टरनी है, ये आपस में कौन से जो मटेरियल उससे बाउंड होते हैं, इनको कौन होल्ड करते हैं, तो वो अब टिल नोन नहीं है उसका मैकेनिज्म. लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ डेंस मटेरियल कैन बी hold or can compact the cisternae with each other. Origin of the Golgi complex. There are different sources that have been proposed from which the new Golgi complexes may arise. The Golgi complexes may arise from the endoplasmic reticulum. Golgi complexes may arise from the nuclear membrane or by the division of the pre-existing dictyosome. It depend करता है type of the cell पे. मेनली डिक्टायोसोम हम जो Golgi बॉडीज होते हैं सिस्टरनी इन प्लांट्स बोलते हैं. तो सिस्टरनी कैन द प्री-एक्जिस्टिंग सिस्टरनी कैन आल्सो हेल्प इन द
synthesis or the origin of the Golgi bodies. Functions of the Golgi apparatus. The Golgi complex is responsible inside the cell for packaging of the protein molecules before they are sent to their destination. So we can say the Golgi body mainly involved in the shipping and receiving center. It's also called the shipping and receiving center. Receive करेगा material को और उसको ship करेगा, transport करेगा to their final destination. This organelle help in processing and packaging the macromolecules like protein and lipids that are synthesized by the cell. तो सेल से जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज हो रहे हैं उनको प्रोसेस करेगा, उनको पैक करेगा और उनको फाइनल मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा. That's why we can also call the Golgi body as the post office of the cell. क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? सिक्योरिटिंग होता है, लेबलिंग होता है और उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है. तो गोल्जी बॉडी का काम भी यही है, प्रोटीन्स और लिपिड के साथ. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस. The cell synthesizes a huge amount of variety of macromolecules. The main function of the Golgi apparatus is to modify, sort, and package the macromolecules that are synthesized by the cells for secretion purposes or for use within the cell. Golgi apparatus is especially extensive in cells specialized for secretion. तो उन cells में होगा जो ज़्यादा involve होते हैं, mainly involved होते हैं secretion में. It mainly modifies the protein that are prepared by rough endoplasmic reticulum. तो rough endoplasmic reticulum से जो प्रोटीन बनती हैं उनकी modification Golgi apparatus में हो रही है. पहली बात है कि वो सॉर्ट करेगा, उसको पैक करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा. और सेकंड है कि उस जो प्रोटीन्स बन रही हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उनकी मॉडिफिकेशन भी गोल्जी बॉडीज में हो रही है. Golgi bodies are also involved in the transport of lipid molecules around the cell. क्योंकि पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसमें तमाम मटेरियल द लिपिड्स आर आल्सो इन्वॉल्व in the transport. The Golgi bodies has referred as the post office where the molecules are packaged, labeled and sent to different parts of the cell. हम डिस्कस कर चुके हैं. The enzymes in the cisternae have ability to modify proteins by the addition of carbohydrate and phosphate by the process of glycosylation and phosphorylation respectively. तो Golgi bodies के जो सिस्टर्नी है उनमें वो एंजाइम मौजूद हैं जो ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को प्रोटीन के साथ ऐड करते हैं या जो फास्फोराइलेशन करते हैं दैट कैन ऐड द फास्फेट ग्रुप. तो फास्फोराइलेशन एंड glycosylation is also the function of the Golgi body. In order to modify the proteins, the Golgi complex imports substances like the nucleotides from the cytosol of the cell. The modification brought about by the Golgi body might form signal sequence. This determines the final destination of the proteins. तो ये जो सिग्नल उसको कोड करते हैं वो भी Golgi bodies में फॉर्म हो रहे होते हैं, सिंथेसाइज हो रहे होते हैं. The Golgi complex also plays an important role in the production of proteoglycans. The proteoglycans are molecules that are present in the extracellular matrix of the animal cells. और मेन एनिमल सेल के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन्स होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जो कॉन्जुगेशन होती है उसको प्रोटीगलाइकेंस बोलते हैं. These proteoglycans mainly help in the identification of the cells. It is also the major site of synthesis of carbohydrates. मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स भी सिंथेसाइज हो रहे हैं Golgi bodies में. These carbohydrates include the synthesis of glycose aminoglycans. Golgi attaches to these polysaccharides which then attaches to protein produced in the endoplasmic reticulum to form the proteoglycans. For example, pectin and certain other non-cellulose polysaccharides are made in the Golgi of the plant cells. Golgi involved in the sulfation process of certain molecules, addition of sulfur. The process of phosphorylation of molecules by the Golgi requires the import of ATP in the lumen of the Golgi. Formation of acrosome during spermatogenesis. During the maturation of sperm, the Golgi complex plays a role in the formation of acrosome. With the elongation of the spermatid, the acrosomal vesicles spread over the nuclear surface and finally collapses with the nuclear membrane forming the cap material. The acrosomal granule becomes the acrosome which lies at the apex of the nucleus and apparently comprises certain enzymes involved in the process of fertilization. तो acrosome जो head of the spermatid है उसकी formation में Golgi body का बहुत important role है. उस head में acrosome में there are different types of enzymes that are mainly helpful in the breakage of the cell and finally help in the process of fertilization.
vector the egg cell. Role of the Golgi complex in the secretion. Golgi complex is considered to play some role in the secretory function of the cell. But the question is this, that they are secreting or synthesizing some substances themselves, or they are simply a storehouse in which the secretory products which are secreted somewhere else in the cell are is simply stored and concentrated. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आइदर ये खुद secrete करता है या secret substance को store करता है उनको transport करता है. Secretory cycle is now well defined and includes four steps in case of eukaryotic acinar cells, and they are the incorporation of amino acids into protein at the surface of rough endoplasmic reticulum जिसमें प्रोटीन्स बनती है. ट्रांसफर ऑफ दीज नेसेंट secretory proteins into cisternae of rough endoplasmic reticulum. The intracellular transport of these proteins to Golgi complex. वहां से Golgi complex को ट्रांसपोर्ट होगी वो प्रोटीन्स जो रफ endoplasmic reticulum में फॉर्मेशन हुई है. The migration of zymogen granules towards the apex of the cell where they are discharged to lumens. फिर वहां से वो lumen में डिस्चार्ज होकर सेल से secrete आउट हो जाएगी, जो हम डिस्कस हो चुके हैं cis phase और trans phase से वो excrete आउट हो जाएगी. Role of Golgi body in the oogenesis. In the early oocyte, the complex is compactly organized. In the later stages, discrete bundles of profiles surrounded by small vesicles are found scattered in the cortical zone. In the early oocyte, the Golgi complex and centrosome are closely associated. Plant cell wall formation is also helped by the Golgi apparatus. The cell wall of plants is made up of fibrils which predominantly contain polysaccharides, along with some lipids and proteins. During cytokinesis, a cell plate is formed between the two daughter nuclei and has around 8 a membrane which later becomes plasma membrane of the daughter cells. There is a clear evidence that the polysaccharides are formed in the Golgi complex and transferred to new cell wall which is laid down while the cell are still growing. तो जो सेल प्लेट बन रही है, जो सेल वॉल बन रही है ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस, उसमें गोल्जी बॉडी का रोल है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, जो मैक्रोमोलेक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो गोल्जी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं और गोल्जी बॉडी से सिक्रीट हो रहे हैं. Formation of the lysosome and vacuoles. Primary lysosomes are formed from the Golgi membranes the same way as the secretory vesicles. The secretory vesicles produce हो रहे हैं, इसी तरह primary lysosome synthesize हो रहे हैं. There is a good evidence that cisternae accumulate hydrolytic enzyme in their more mature regions. तो जो cisternae होते हैं उनके mature regions में hydrolytic enzymes accumulate होते हैं और वो hydrolytic enzyme at the end help in the formation of the lysosomes. क्योंकि lysosome में hydrolytic enzymes होते हैं. Some vacuoles in plant cells have been found to contain small amounts of hydrolytic enzymes, and these are presumed to have been derived from the Golgi complex. Pigment formation is also the function of Golgi complex. In many mammalian tumor and cancer cells, the Golgi complex has been described as a site of origin of pigment granules. तो pigment formation का भी pigment formation में Golgi apparatus का important role है. Regulation of fluid balance. In certain protozoa, the Golgi complex is also concerned with the regulation of fluid balance. तो different contractile vacuole की formation भी Golgi apparatus से हो रही है. That's why Golgi apparatus are helpful in the regulation of the fluid balance. These are different functions of the Golgi apparatus that we have discussed. The major function of the Golgi body, Golgi complex का जो है वो secretion का है, वो post office की तरह है जो प्रोटीन को modify करता है, उसको पैकेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है. And along with that, there are other functions like the lysosome formation, acrosome formation, pigment formation, and the regulation of fluid balance and the glycosylation, phosphorylation. These are functions are important for the integrity of the cell and for the maintenance of the cell. That's all about the Golgi bodies. तो Golgi bodies को हम summarize करें तो these are the stacks of the cisternae, flattened stacks of the cisternae. और cisternae जो है वो एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं. उनमें मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, मुख्तलिफ फास्फोलिपिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स को सिस फेस से रिसीव करते हैं और ट्रांस फेस से उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. That's all about the Golgi bodies. Thank you so much.